A very good afternoon to everybody and welcome to UGC NET 24/7. I'm Professor Aishwarya Puri. Welcome to my class. As promised, आज मैं आप लोगों को अमेरिकन लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में बताने वाली हूँ. एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं. क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, आ जाइए. साउंड इज क्लियर, साउंड इज क्लियर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. चलिए, थोड़ा सा सॉरी, वो मेन जो आपको स्क्रीन का ये पोर्शन है मेरा, मैं स्क्रीन अपनी कैमरा का लोकेशन मूव नहीं कर पा रही हूँ, तो आई ट्राई टू स्पीक एवरीथिंग और आपको सब समझाने की पूरी कोशिश करूंगी. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम करने वाले हैं आज की क्लास में अमेरिकन लिटरेचर को. सो लेट्स बिगिन. गुड आफ्टरनून. राइट, सो सबसे पहले जिन राइटर को मैं लेने वाली हूँ वो है H.W. लॉन्गफेलो. H.W. लॉन्गफेलो की अगर मैं बात करूँ, इनका कंप्लीट नेम है हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो. इनका जो जिस स्कूल ऑफ पोइट्री में हम असेंशली इनको कंसिडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फायरसाइड पोइट्री. ये लोग फायरसाइड पोइट्स इसलिए कहलाते थे क्योंकि ये जो पोइट्स हैं, ये एंड अ कपल ऑफ अदर पोइट्स, दे वर राइटिंग फॉर द कंट्री साइड, दे वर राइटिंग फॉर द ऑर्डिनरी डेली लाइफ. They used highly traditional and conventional forms of poetry. Their poems were very metered, highly metered, very structured. They were also very musical in their tone, so as to be easy to be remembered. So H.W. Longfellow belongs to that school of poetry. So इनके बारे में एक बहुत फेमस जो बात है, जो which I think also is a UGC previous year question, बहुत पुराना question है ये, that is that he is considered to be a children's poet because he wrote a lot of poetry for children. He himself loved children. कल भी जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था, जिनके who loved children, and hence we have India में Children's Day. So when he was a beloved of children and he himself loved children dearly. So he published a couple of poems, poetic collections dedicated to children's poetry, namely The Village Blacksmith, 1840, The Children's Hour, 1860, Paul Revere's Ride, 1861. He is also the first American poet to translate Dante's Divine Comedy into English. He also wrote a couple of novels, them being Hyperion, 1839, and Kavanagh, 1849. He also wrote epic poems. One is Evangeline, and the other is an Indian epic, the Song of Hiawatha, 1855. Some other, now this is a list of his poetic works. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जनरल आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं. He also wrote a travelogue. Travelogue is a work that is a piece of non-fiction written around, or it centers around a particular travel experience. The name of the work is Pilgrimage Beyond the Sea. And he also wrote a play called The Spanish Student, a play in 3 acts. The Spanish Student is also a UGC NET का previous year question. ठीक है जी? हाँ जी. Next is a very famous poem of his called The Psalm of Life. ये poem जो है, आप एक बार ये I won't speak, I won't recite the whole poem, but do read it because इसमें से पास में UGC का previous year question बना हुआ है इस poem के quotes में से. और एक famous, एक टाइम में, मतलब अब से कई साल पहले एक famous poem थी जिसमें से काफी quotes आ जाते थे पेपर में, तो NFT कह सकते हैं उसको, अब से कई साल पहले. So आप इसका quotation और इसके quotes definitely consider करेंगे. नेक्स्ट पोइट है हमारे वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन के लिए बहुत सारे टर्म्स हम यूज कर सकते हैं. ही वाज कॉल्ड द प्राइड ऑफ अमेरिका, ही वाज कॉल्ड द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी. उसका रीजन ये है दैट ही वाज राइटिंग इन अ टाइम व्हेन अमेरिका वाज ट्राइंग टू नेविगेट its individuality and its identity in a newly independent space. Also, he chose to write in free verse. Free verse poetry लिखते थे. कल एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था यूट्यूब पे कि फ्री वर्स पोइट्री के लिए ये जाने जाते थे, इसलिए इनको अमेरिका में द फादर ऑफ फ्री वर्स पोइट्री भी कहते हैं. इनकी सबसे फेमस पोइटिक कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसका पहला एडिशन पब्लिश हुआ था 1855 में, जो आई थिंक रिसेंटली किसी यूजीसी में पूछा भी गया है, या तो अक्टूबर में या फेब मार्च में या जून में ये पूछा गया है पेपर में, इसका पब्लिकेशन ईयर. So it was 1855 when the first edition was published. इसके consecutive 9 editions publish हुए थे, very famous. फर्स्ट एडिशन में इनकी बहुत फेमस पोएम पब्लिश हुई थी जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. And let me tell you that this poem was also highly criticized because because of its overt sexual and sensual tone.
Another thing I discussed yesterday was that Walt Whitman was a homosexual, so undertones of homosexuality can also be read in his poetry. So that is also one reason. इसके total 18. Sorry, I think this is a एक करेक्शन कर लेना प्लीज, 7 नहीं 9 एडिशंस थे इसके 1891 तक. एंड ये जो पोयम है कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज्यादा जुड़ी है. इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो ही बिलोंग्स टू दिस वेरी स्पेसिफिक स्कूल ऑफ पोइट्री कॉल्ड अमेरिकन रोमांटिसिज्म. उसमें भी पर्टिकुलरली ट्रांसेंडेंटल पोएट ये माने जाते हैं. ठीक है जी. तो कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पोइटिक कलेक्शंस के टाइटल्स मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, then there was I Sing the Body Electric, When Lilacs Last in the Dooryard Bloom. ये तीन बहुत famous इनकी poetic collections हैं that were published. These were his three famous poems published in the poetic collection Leaves of Grass. अब ये तीनों के quotes आप लोग एक बार खोल के देख लेना because तीनों poems important है. Also, When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed and Oh Captain, My Captain. These are two elegy poems that he has written remembering Abraham Lincoln. ओ कैप्टन माय कैप्टन के कोट्स तो कई साल मतलब ओवर द टाइम ओवर द इयर्स रिपीटेड क्वेश्चन रहा है यूजीसी में. व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोयार्ड ब्लूम इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट वन बिकॉज टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बनता है. आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक का कोट भी यूजीसी में पास में पूछा गया है, सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. Then there is I Hear America Singing, Out of the Cradle Endlessly Rocking, Pioneers of Pioneers, Oh Me, Oh Life. So some famous poems of his. Some other important works that he has written: Drum Taps, which is a very famous poetic collection. Then there is Democratic Vistas. Franklin Evans is a novel. It is the only novel written by him. ये किसी TGT PGT exam का previous year question है, आपका भी बन सकता है. And then there is Memoranda during the war. The next writer that we are looking at is John Greenleaf Whittier. John Greenleaf Whittier is important for us because he wrote and advocated abolition of slavery. So he was writing during a time in America. Again, he was writing in the 19th century. He was writing romantic in ये भी जो romantic age है उसी period में ये भी लिख रहे थे. एंड जो जैसे इंग्लैंड में जब रोमांटिसिज्म चल रहा था वहां पे भी एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एक प्रोजेक्ट था जो सोशल जितने भी हमारे सोशल वर्कर्स थे उन्होंने टेकअप किया हुआ था. अमेरिका में भी सेम था. अमेरिकन रोमांटिसिज्म में भी स्लेवरी के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट थी. जॉन ग्रीनलीफ विटियर उसकी एक लीडिंग वॉइस थे. दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स. इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको नेम्स बता देती हूँ जो मैंने यहाँ वहाँ एग्जाम्स में देखे हैं, जैसे कि मॉड मुलर. देन देयर इज वॉइसेस ऑफ फ्रीडम, songs of labor, home ballads, poems written during the progress of the abolition questions in the United States, and ballads of New England. यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ही बिलोंग्ड टू न्यू इंग्लैंड. तो न्यू इंग्लैंड की नेचुरल लैंडस्केप के बारे में इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं. जैसे कि ये प्रोज वर्क्स की लिस्ट है, आप उसमें देखो, द सुपर नेचुरलिज्म ऑफ न्यू इंग्लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय हिम. ये आई थिंक मुझे थोड़ा सा याद भी आ रहा है, शायद बहुत पहले बहुत सालों पहले ये यूजीसी में पूछा भी गया है कि कौन से अमेरिकन राइटर हैं जो न्यू इंग्लैंड एरिया से एसोसिएटेड है. सो दैट वाज हिम. Then there is Old Portraits and Modern Sketches, The Stranger in Lowell, Leaves from Margaret Smith's Journals. The next writer is Ralph Waldo Emerson. जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉल्ट विटमैन रोमांटिसिज्म में ट्रांसेंडेंटलिज्म के साथ एसोसिएटेड है एज अ पोएट. तो राल्फ वॉल्डो एमरसन एंड हेनरी डेविड थरो ये दो वो राइटर्स थे जो ट्रांसेंडेंटलिज्म के साथ जुड़े थे एज थियोरिस्ट. तो इन्होंने ट्रांसेंडेंटलिज्म की थियोरी को डेवलप करने में मदद की है. अगर आपको नहीं पता है, हाँ आई एम सो सॉरी बाबा, मैं समझ सकती हूँ स्क्रीन का इशू आ रहा होगा बिकॉज थोड़ा सा एक सेकेंड अटक गया है क्या ये. I do understand स्क्रीन का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा. I've been trying to reduce the screen size but somehow वो हो नहीं पा रहा है. I'm really sorry for that. मैं आपको PDF जो प्रोवाइड करूंगी आप उसमें से पढ़ सकते हैं. अभी आप साथ साथ समझ लीजिए इसको प्लीज. नेटवर्क का इशू तो नहीं आ रहा. आई थिंक वीडियो हल्की सी अभी स्टॉप की थी.
नेटवर्क का इशू तो नहीं आया ना बीच में? एक मिनट, आई ट्राई टू डू इट, लेट मी सी। इज इट फाइन अगर मैं अपना ये वीडियो डिस्प्ले अगर हटा दूं तो? इन दैट केस आपको पूरी प्लेन स्क्रीन दिखेगी। लेट मी ट्राई अगेन, वेट। अब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई विल बी एबल टू मैनेज इट नाउ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब एक बार मुझे बताओ जरा देख के। अब एक बार जरा मुझे देख के बताओ। आई थिंक दिस विल बी फाइन नाउ। आई थिंक दिस विल बी फाइन नाउ, लेट्स बिगिन। सो राल्फ वॉल्डो एमरसन, हेनरी डेविड थरो, ये दोनों ट्रांसेंडेंटलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म एसेंशियली एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट है दैट इज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन रोमांटिसिज्म। सो जो अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट थी वो पहली सेल्फ कॉन्शियस लिटरेरी मूवमेंट है इन द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ अमेरिका। And because they were a newly independent nation, they were trying hard to navigate their identity in this new space. And अमेरिका को एक ग्रेट ऑल्टरनेटिव की तरह तब प्रेजेंट किया गया था as an alternative of Europe, because Europe stood for the older world, the older social order, because it had a much longer history, courtesy the Roman Empire, the Greek Empire. And now America, whatever history they had with the Native Americans, it was erased in the process of colonization. So now when America becomes newly independent, उन्हें nation building तो करनी ही करनी थी, साथ ही साथ ये जो इतने सारे लोग जो बाहर से यहाँ पे आ गए थे, उन सबको अमेरिकन स्पिरिट भी जो है ट्रांसफर करना था। उन सबको ऑल ऑफ देम दे हैड टू बी रादर टॉट और कंडीशनड टू रिजॉइस इन द स्पिरिट ऑफ अमेरिकननेस. So in order to do that, whatever was the situation of an individual in the contemporary time, the individuals were asked to move beyond them. जो भी उनके लिमिटेशंस हैं, जो भी उनके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थे या हर्डल्स थे, इंडिविजुअल्स को टीच किया जा रहा था उनके आउट एंड बियॉन्ड मूव करने के लिए, ताकि वो सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ भी कर सकें और साथ ही साथ दैट आल्सो फैसिलिटेट्स ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। सो उस पीरियड को हम ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं। वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म भी आती है जो मॉडर्न एज तक चलती है अमेरिका में, दैट इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ द अमेरिकन ड्रीम. They were selling the idea of the American dream. The fact that whoever you are, whichever country you belong to, whatever you are, now that you're in America, be meritorious, work hard, contribute in American nation, American national building. And if you do that, if you contribute to the nation building to your best merit, you will be rewarded for that. You will be able to create a beautiful good life for yourself. So अमेरिकन ड्रीम को सेल किया जा रहा था। ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है वो अगर मैं सेलिंग वर्ड यूज कर रही हूँ, सो प्लीज डोंट बिलीव कि कुछ कैपिटलिस्ट एलिमेंट है इसके अंदर। ट्रांसेंडेंटलिज्म वाज रादर मोर रोमांटिक, इट वाज मोर एब्स्ट्रैक्ट. So it looked at humans as better creatures, as good creatures who are essentially good at heart. And these are the people, these are the children of God, these are the people who they have a soul, and their soul is connected to the soul of the universe. So अगर हम spirituality practice करेंगे, universal love practice करेंगे, kindness practice करेंगे, so ये सब चीजें हमें मदद करेंगी universal good के साथ connect करने में. ये था आइडिया ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म. आप वॉल्ट विटमैन की पोइट्री देख लेंगे, आप उसमें आपको यही थीम मिलेगा. आप एमरसन की टेक्स्ट रीड करेंगे, उसमें यही चीजें मिलेंगी. आपको हेनरी डेविड थरो के आप वर्क्स पढ़ेंगे, उसमें भी सेम सिमिलर आइडिया आपको देखने को मिलेगा. ठीक है जी. सो एक इनका बहुत ही फेमस प्रोज वर्क है कॉल्ड नेचर. इट वाज पब्लिश्ड इन 1836 and it is considered to be the manifesto of the American transcendentalism.
He also borrowed a lot from Hindu religion because Hinduism being one of the most ancient religions of the world. It talks a lot about soul, spirituality, the connection of the human soul with the divine soul, and how nature can act as an appropriate medium for an individual to achieve that spiritual awakening. So हिंदू रिलीजन से बहुत बोरो करते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, वेदास को इन्होंने पढ़ा है और वहां से इन्होंने बहुत कुछ बोरो भी किया है। साथ ही साथ इनकी थियोरी में नेचर की तरफ लव, नेचर को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने का एक एस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। इंट्यूशन पे बहुत ही फोकस है, सेल्फ रिलायंस पे बहुत ही फोकस है। ये वही आइडिया है सेल्फ रिलायंस का जिसको लेटर ऑन महात्मा गांधी भी बोरो करेंगे। जब उनका एक स्वराज मूवमेंट शुरू होता है तो सेल्फ रिलायंस वो इन्हीं से इनफैक्ट बोरो करेंगे। Now this is a list of some of his other important essays, so you can definitely have a look at them put in chronology. And then there are a couple of important other essays that he has written, say Self-Reliance, The American Scholar, Politics, New England Reformers, etc. Now, इसमें एक ऐसे है सेल्फ रिलायंस। कल एक हमने यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था जहां पे ऐसे की लाइंस को क्रोनोलॉजी में पुट करने की बात की थी। अब देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं बाउंसर क्वेश्चंस बोलती हूँ। अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं इंग्लिश पेपर 2 के तो 20-30% क्वेश्चंस आप मान के चलिए ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बाउंस ऑफ होंगे। अब इंडिविजुअल ऐसे आपने वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा भी है तो भी आप उसकी लाइंस को क्रोनोलॉजी में पुट कर पा रहे हैं या नहीं, ये तो बहुत ही एक अनयूजुअल और बहुत ही वन इन अ मिलियन चांस फैक्टर है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस की वजह से डोंट बी डिसहार्टन, इवन इफ यू लूज मार्क्स देयर इट्स फाइन, एंड आई मीन यू हैव नो नेगेटिव मार्किंग, आप तुक्का भी मार के आ सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया करो, ऐसे क्वेश्चंस की टेंशन मत लिया करो। इसके अलावा couple of important poems he has written like Brahma, Uriel, The Swings, The Snowstorm, The River, The World Soul, etc. The next writer that we are looking at is Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe lived a short life, but he lived a very rich life, particularly because he contributed greatly to the creation of prose fiction in English literature. Also, अमेरिका में गॉथिक स्कूल को पॉपुलराइज करने वाले और शॉर्ट स्टोरी फिक्शन को पॉपुलराइज करने वाले भी यही थे। He is also considered to be a pioneer of modern detective stories. Some of his great stories are The Purloined Letter, Mystery of Mary Roget, The Murders in the Rue Morgue, The Goldberg, etc. The Purloined Letter, do read it because at some point it was prescribed in the Delhi University syllabus. इसका समरी आप लोग पढ़ लेना because I think पेपर में इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। Some other important short story works are provided to you here. Please have a screenshot of it. The Fall of the House of the Usher, मैंने अपने पेड क्लास के स्टूडेंट्स को भी बोला था, डू रीड इट। रीजन बीइंग रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे इसके ऊपर आई थिंक एक मूवी या सीरीज आई है। सो रिसेंटली एक ट्रेंडिंग टॉपिक है इसका, connected to the pop culture. So do read the summary for this work. Then this is a list of a couple of poems that he has written: A Dream Within a Dream, The Bells, Al Araf, The Haunted Palace, Annabel Lee, The Raven, El Dorado, The Conqueror Worm, etc. The next writer that we're looking at is Henry David Thoreau. Like mentioned, इनका भी association transcendentalism के साथ है। इनको popularly poet naturalist कहा जाता है। इनका बहुत important एक essay था called The Civil Disobedience, which again inspired Mahatma Gandhi, that he later on used in India as a political movement. He also spoke against slavery in America. So some of his important works are Slavery in Massachusetts, 1854, Cape Cod, 1865, Plea for Captain John Brown, 1859, and Walden, 1854. Walden being one of the most important works by him. The next writer is James Russell Lowell. James Russell Lowell is a very famous American poet and essayist. He was a democratic poet and he stood for American nationalism and patriotism. Some of his famous poems are A Stanza on Freedom, A Letter, The Search, The First Snowfall, Above and Below. Then this is a collection of his famous essays. Please do have a look. Fable for Critics, I feel at some point was asked as a question in UGC. So please do have a look at it. The next writer is a very important one, Herman Melville. Herman Melville के although मैं अगर आपको honestly बताऊं तो एक ही इनका work है जिसको बहुत डिटेल में आपको करना है, जिसमें से पेपर में questions बनते हैं, and that is Moby Dick. Moby Dick being his very famous novel.
इसको बहुत डिटेल में करना है, बहुत डिटेल में, बिकॉज अगर आप यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे इसमें से बहुत सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब समरी के अंदर से निटी ग्रिटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स तो आपको सारे पता होने चाहिए, अंदर शिप्स के नेम्स, बोर्ड्स के नेम्स, कैरेक्टर्स के नेम्स, सिटीज के नेम्स, प्रोफेशंस के नेम्स, ये प्रॉपर नाउन क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। प्लस अगर आप उनके साथ थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। प्लस इसके अंदर से थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि कल हमने क्वेश्चन किया था कि कैप्टन अहाब के डाउनफॉल का रीजन क्या बनता है। सो दैट इज हिज एरोगेंस, हिज ईगो, दैट और जिसको हम ग्रीक ट्रेजेडी में ह्यूब्रिस भी बोलते हैं, दैट बिकम्स अ लीड, दैट बिकम्स अ रीजन फॉर हिज डाउनफॉल, दैट बिकम्स हिज hamartia. So this is a list of his other famous works. टाइपी अ पीप एट पॉलिनेशियन लाइफ, ये भी यूजीसी में पूछा गया है। मैडी एंड अ वॉइस थिटर, वाइट जैकेट और द वर्ल्ड इन अ मैन ऑफ वॉर, बैटल पीसेस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉर, it is poems, a collection of poems. And then Claril, a poem and pilgrimage in the Holy Land. This is a epic poem that he has written. Another works, Omu, a narrative of adventures at the South Sea. UGC previous year question यहाँ से बना है. Bartleby, the Scrivener, a short story. UGC net previous year question. Israel Potter, the Confidence Man. So आपने ओमू, बार्टलबी, क्लैरल और मोबी डिक और टाइपी, इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना आज प्लीज, थोड़ा सा इस पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? राइट, लेट मी मूव टू माय सेकंड पीपीटी नाउ. The next writer, Henry David Thoreau, these we had done. The next writer is Ernest Hemingway. Ernest Hemingway will be important in the sense that इनके कुछ गिने चुने नॉवेल्स हैं, वो गिने चुने नॉवेल्स का वॉर एसोसिएशन है, उनका एसोसिएशन है किसी ना किसी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर के साथ। तो कौन सा नॉवल किस वॉर के साथ एसोसिएटेड है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं या उनकी सेटिंग क्या है, ये आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इनका बनता है इनकी आइसबर्ग थ्योरी से, यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है, आइए एक बार थोड़ा देख लेते हैं। Ernest Hemingway started his career as a journalist. So when he got into writing, first of all, let me tell you, he is an American modernist. He was a modernist writer. And when he was writing, he grew up during the time of the war. इसलिए he is popularly considered to be, or he belongs to that genre of writing called known as the angry young men. angry young men एक movement आई गई थी अमेरिका में। इसमें कुछ राइटर्स को कंसिडर किया गया था, ये वो राइटर्स थे who were born and brought up in America, but then during the war or maybe later they moved out of America, but then they show a disdain towards war, they show a disdain towards the social class structure. There is a sense of lack of understanding of life in them. They indulge in meaningless relationships, they indulge in meaningless drinkings, etc. So Ernest Hemingway belongs to that group of writers. Because he was a journalist, when he started writing, he wanted to do away with all the rules that had been established in American English writing. उन्होंने कहा कि अमेरिकन इंग्लिश राइटिंग अभी तक बहुत हेवीली बोरो कर रहा है यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन से, और अगर हमें अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर को ग्रो करना है, प्रोलिफरेट करना है, उसको एक अपनी इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल स्टेटस प्रोवाइड करना है, then it is really really important, it is rather imperative कि वो यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन से उसको ब्रेक अवे करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया अपने लिटरेरी स्टाइल्स के साथ, अपनी राइटिंग फॉर्म्स के साथ, वहां से ही केम अप विद दिस थ्योरी कॉल्ड द आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग आप सब लोग जानते हैं, इट फ्लोट्स इन वाटर इन द ओशन, and these are huge blocks of ice. You can only see the tip of the iceberg, right? You can आपकी vision में you can only see the tip of the iceberg outside of the water level or above the water level. Below the water level, it is quite deep and कई meters long also it is, and it keeps floating in water. So उसी similarly उन्होंने कहा था कि अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी literary work लिख रहे हैं, कोई prose work लिख रहे हैं, कोई novel भी लिख रहे हैं for that matter, it is important that हम as a writer we don't give away too much to the reader. Let the reader decipher the meaning by himself. Let the reader put in some work while constructing the meanings for himself. So let us write using an economy of words. Words को economically use करते हैं
or let the reader then do the rest of the job. So this is what he meant by iceberg theory. इसलिए आप देखें कि उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही पॉइंट ब्लैंक राइटिंग स्टाइल है, बहुत ही डायरेक्टली लिखते हैं, घुमा फिरा के नहीं लिखते पॉइंट को. He doesn't beat around the bush, he comes to the point straight. He won the Nobel Prize in Literature in the year 1954. His very famous novella, The Old Man and the Sea, also made him win the Pulitzer Prize in the year 1952. Now, The Old Man and the Sea पिछले एक सालों में मैंने बहुत सारे TGT PGT एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन देखा है. आप लोग जरूर इसकी समरी पढ़ेंगे. सेंटियागो का कैरेक्टर है, मर्लिन फिश का इसमें मेंशन है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. डू रीड द समरी, डू मेक इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन इट. There are also a couple of awards that have been named after him, like the Hemingway Award, and then the Hemingway Foundation created the Penn Award. So these are two very important awards that have been named after him. And there's this list of other works, novels that he has written. Across the River, Into the Trees, The Torrents of Spring, The Sun Also Rises, A Farewell to Arms, For Whom the Bells Toll, Three Stories and 10 Poems, The Snows of Kilimanjaro, which is a short story, Men Without Women in Our Time. So इसमें से The Sun Also Rises, A Farewell to Arms, For Whom the Bells Toll, very important, very important. Do look at their summaries, do look at the characters, do look at their association with important historical events. And then The Snows of Kilimanjaro, UGC के previous year question में options में मैंने कहीं पे देखा था इसको. So this has also been asked. The next writer that we're looking at is Eugene O'Neill. Now, Eugene O'Neill is considered to be the greatest American dramatist. Again, he is a modernist writer. He was writing during the modern era of American English literature. Like Ernest Hemingway, he believed in creating his own style for his writing. So what he did is that, number one, he popularized the use of vernacular American English. Because when you look at how Americans speak and when you look at how the British speak, there's a stark difference. The British, they speak in King's English, and the Americans, they speak in their own dialect called the American English. American English के अंदर बहुत सारे और cultures के dialects का influence आपको देखने को मिलेगा, because American English is not organic. It was formed, इसका formation over the years हुआ है. तो African cultures का influence, Italian cultures का influence, बहुत सारे और South East Asian immigrants हैं वहाँ पे, तो उन सब का एक influence जो है American English में देखने को मिलता है. So by the time America, stands out in the modern world, postmodern world, this specific vernacular English had developed in America. So he popularized its use. Second, he wrote these plays that centered around the lives of middle class working people. So these are the individuals who have been pushed to the edge of the society. They lack necessary resources in their life, and they ultimately fall into despair. So his stories are rather more pessimistic. He was also the first American playwright to receive the Nobel Prize for Literature in the year 1936. Now, this is a list of some of his great works. Long Day's Journey into Night. It was published posthumously in 1957, and एक minute. It was published posthumously in 1957, which won the Tony Prize and the Pulitzer Prize. Beyond the Horizon won Pulitzer Prize. Emperor Jones was his very famous novel that also became his Broadway debut. Broadway theatre में इनका debut ये play है जो perform हुआ था. Anna Christie is a very important play again. It was also featured on Broadway, which won him his second Pulitzer Prize. And इसमें theme है prostitution का. ये UGC का previous year question भी है. He won his third Pulitzer Prize for Strange Interlude, 1928. A Wilderness is a UGC NET previous year question. The Iceman Cometh, कल इसमें से हमने UGC का एक previous year question देखा था. ठीक है? Right. The next writer is Henry James. Henry James is a very famous American novelist, and his works helped American literature transition from realism to modernism, because he stood right at that junction जहाँ पे there was the 19th century was ending and the 20th century was beginning. So realism से या naturalism से modernism के बीच में transition करने में इनका literature जो है बहुत ही crucial रहा है.
इनके नॉवेल्स एसेंशली इंटरकॉन्टिनेंटल थे, मतलब जनरली इनके नॉवेल्स में आपको अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट और यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट का रेफरेंस देखने को मिलेगा. For example, you have The Portrait of a Lady 1881, The Ambassadors 1903, and The Wings and the Dove 1902. He was born an American, but then he took up the English nationality in 1915. तो यहाँ से मैं आपको एक और क्वेश्चन भी दूंगी, जो आपने अभी मुझे लाइव चैट सेक्शन में नहीं बताना है, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में एज योर होमवर्क. जैसे कल भी आप लोगों ने किया था, मैंने चेक किया था आप सबका होमवर्क. तो मुझे प्लीज बताना और कौन से ऐसे अमेरिकन फेमस राइटर स्लैश पोएट हैं who also took up American nationality and in which year he did that. ये आपने मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है. He was nominated for Nobel Prize thrice, 1911, 1912, 1916 में. He's also popularly called the Shakespeare of American fiction. Some of his travel works are Italian Hours and The American Scene. Italian Hours is a UGC previous year question. Then this is a list of some of his other famous works. Please do have a look. You can have a screenshot. The next writer is Richard Wright. Richard Wright is a Black American, Afro-American writer, and as you can guess, he wrote on the plight of Afro-Americans in the late 19th and early 20th century in America. He also wrote a very popular and acclaimed autobiography called Black Boy in 1945. His most popular work is considered to Native Son is considered to be his most popular work. It was published in 1940. Now this is again a list of some of his other important works. इसमें से Uncle Tom's Children से UGC का previous year question आया हुआ है, so please do some extra reading on it. Okay. He also published a collection of haikus. So it was titled, आप देखेंगे लिस्ट में, Haiku the Other World. So this also got published. The next writer is Robert Frost. Robert Frost के बारे में सबसे interesting fact ये है that when he started writing, he had already become a celebrated writer in England before he was acknowledged in his homeland. So he is popular for using colloquial speech in his poetry and also description of rural life. He is also named as the Poet Laureate of Vermont in America. He was nominated for Nobel Prize in Literature 31 times. Please note 31 times उनको nomination मिला था. इन्हें 4 Pulitzer Prizes awarded हैं. किन works के लिए please have a look. New Hampshire 1924, Collected Poems 1931, A Further Range 1937, A Witness Tree 1943. इनकी बहुत सारी पोएम्स हैं जो फेमस हैं, जिसमें से कोट्स आते हैं, तो कोट्स आ सकते हैं. जैसे फायर एंड आइस सीबीएसई के सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, सो उस लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो प्लीज टू हैव अ लुक. फायर एंड आइस की कोट्स आप लोग प्लीज देख लेना. बहुत ही छोटी सी, आई थिंक 6, 7, 9 लाइन्स की पोएम है. वेरी शॉर्ट, वेरी क्यूट पोएम. अच्छा, ये जो टाइटल है फायर एंड आइस, इट ऑल्सो इंस्पायर्ड दिस वेरी फेमस राइटर ऑफ बुक्स ऑफ fiction called George R.R. Martin. George R.R. Martin then wrote this very famous collection of novels called A Song of Ice and Fire. ये इंस्पायर हुआ था इसी पोएम से. And A Song of Ice and Fire then came to be known popularly as the Game of Thrones. Game of Thrones आप सब लोगों ने देखा होगा, HBO पे बहुत ही फेमस एक फिक्शनल, सेमी फिक्शनल, हिस्टोरिकल शो है, और बहुत लोगों ने देखा है, बहुत ही पॉपुलर भी है. तो ये जो टाइटल है ये इस पोएम से आया था. Then a couple of other important poetic collections that he has written are A Boy's Will North of Boston, Mountain Interval, जिसमें उनकी फेमस पोएम The Road Not Taken आई थी. He also wrote 2 plays called A Mask of Reason and A Mask of Mercy. Now कल मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था जहाँ पे miles to go before I sleep. As I had predicted, most people feel or they assume that it would be that it was curled out from this famous poem The Road Not Taken, but it was in fact not, right? So वो हमने कल discuss already कर लिया है. The next writer is Sylvia Plath. Sylvia Plath is a very famous confessional poet from America, and उनकी personal life भी उतनी ही ज़्यादा interesting थी जितना ज़्यादा उनका literary career था. She married the famous American English poet Ted Hughes, who was also the poet laureate of England. And she was in a very unhappy marriage with him. She fell into depression and eventually committed suicide.
Some of her famous poetic collections are The Colossus and Other Poems and Ariel, 1960-65 respectively. So please do have a look in collections में कौन कौन सी famous poems हैं या names हैं. Daddy is a very famous name. Lady Lazarus is a very famous poem written by her. She won Pulitzer Prize in the year 1982 posthumously for her collection of poems called The Collected Poems. She was the first person ever to win a Pulitzer Prize posthumously. Then, The Bell Jar is a very famous semi-autobiographical novel written by her. She got the novel published under the pseudonym Victoria Lucas. द बेल जार इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर से यूजीसी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, तो आज ये जरूर आपने डिटेल में इसको पढ़ना है. So this work essentially talks about her own descent into depression and insanity. And this novel is also considered to be इसका जो जॉनरा है, बिकॉज इसके अंदर अब क्या होता है ना, एक तो होता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, एक नॉवल होता है जिसमें एग्जैक्टली अब बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करते हैं, अपनी लाइफ के रियल इवेंट्स को या एपिसोड्स को यूज करते हैं अपने नॉवल में. सो दैट वेज अ नॉवल बिकम्स ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी पूरी लाइफ को इवेंट बाय इवेंट, एपिसोड बाय एपिसोड उसमें मिरर कर रहे होते हैं. अगर आपके नॉवल के अंदर एक हिंट है of certain aspect of your life, of your real life, then in that case, that novel is called roman à clef. Roman à clef in English it translates into novel with a key. की क्या है? की है बेसिकली आपकी रियल लाइफ का वो एलिमेंट जो आपने यूज किया है अपने नॉवल में. सो एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है. इट इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ autobiography. The novel opens with the famous opening lines. It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs. All right. तो थोड़ा सा डिटेल है इसके अंदर, ये आपको मेरे नोट्स में एसेंशियली मिल जाएगा. So yes, that's all for today. Thank you so much everybody for being with me. American literature के बहुत important writers और इनके works मैंने आपको provide कर दिए हैं. Of course मैं आपको एक पूरी collected PDF दूंगी मेरे सभी crash course की PDFs की, so उसमें आप इसमें से definitely पढ़ सकते हैं. So I'll be going back to the office tomorrow. Probably मैं कल या परसों में काम करना चाहूँगी. साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ अगेन, बिकॉज भाई दूज चल रहा है, ये अच्छा मौका है आप सबके पास अपनी यूजीसी नेट की तैयारी को और बेहतरीन और पक्का करने का. बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड अभी भी जैसे आई लुक एट दीज क्वेश्चंस, आई लुक एट दीज थिंग्स, ये इतना सा करना ही बहुत डिफिकल्ट है. एंड देन किस पोर्शन को, किस पार्ट को एक्सपैंड करके पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, ये एक डिफिकल्टी सभी स्टूडेंट्स को रहती है. तो मैं आपको जो यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, मैंने पहले भी बोला था, आई कैन ओनली टच अपॉन द सिलेबस से 30-40% और मे बी इवन लेसर देन दैट. 100% सिलेबस को हम पेड क्लासेस में ही कवर करते हैं. पेड क्लासेस में माई सिलेबस दिस वीक आई एम अबाउट टू फिनिश इट. वी डिड टेक अ कपल ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस. मैंने 6 months प्लान किया था, इट वेंट ऑन टिल 7 months, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड दिस टाइम दैट मैं बहुत अच्छे से सिलेबस को बहुत ही एग्जॉस्टिवली जो है कवर कर पाई, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाई. एंड आई एम श्योर ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज मटेरियल आपके पास बहुत है. देखो दुनिया में मटेरियल आप प्रिंट आउट कर करके अपना पूरा कमरा भर सकते हो मटेरियल से, बट कम मटेरियल से सिलेक्शन वाली तैयारी कैसे करनी है, डेफिनेटली उसकी मेंटरशिप की आपको जरूरत रहती है. दूसरी बात है, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो ये प्लानिंग हमें लेके चलनी है. हमेशा कोई भी एस्पिरेंट जो पहला अटेम्प्ट देगा, स्मार्ट चॉइस वो यही रखे कि वो 2 अटेम्प्ट्स की तैयारी एक साथ करे. मान के चले कि लक फैक्टर रहता है, बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है लोगों का, तो एक तैयारी के बाद एक दूसरी तैयारी, वो हमेशा साथ साथ उसको प्लानिंग में रखें. दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो इतनी बेहतरीन दे दो कि फिर सेकंड की वैसे जरूरत ही ना पड़े. मेरी कोशिश यही रहती है मेरे स्टूडेंट्स के साथ कि मैं उनको वो दूसरी तैयारी तक मैं लेके ही ना जाऊं, वो पहली अटेम्प्ट में ही उनका एग्जाम क्लियर हो जाए. कोशिश ऑफ कोर्स मेरी यही रहती है. बट आगे फिर अब आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कितने घंटे दे रहे हो पढ़ाई में, आप रिविजन कैसी कर रहे हो, तो बाकी चीजें उस पर डिपेंड करती है. आपका सिलेक्शन होना ना होना देखो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपको उस रास्ते तक लेकर जाना, आपको उसके लिए राइट टूल्स देना, आपको अच्छे से सब समझाना, वो मेरा काम है. सो वो हम आपके लिए बहुत अच्छे से करते ही हैं. अगर आपको भी लग रहा है कि आपको ऐसी एक बहुत ही प्रोफेशनल मेंटरशिप के थ्रू आप कम टाइम में कम मेहनत से बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं अपने नेट या जेआरएफ के लिए, और जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जेआरएफ स्कॉलर बनना चाहते हैं इंडिया में, then I think it would be much recommended to get yourselves enrolled in these courses. Also, the reason being because right now we're offering the cheapest ever or the most affordable courses across all online platforms in India.
So also the prices are going to increase soon. So I think this is the right time to enroll. भाई दूज की celebration फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सभी बैचेस पे डबल वैलिडिटी ऑफर भी वैलिड है, रनिंग है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, आप सिर्फ बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगी पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज प्लस बुक्स वाला मेगा पैक लो, बिकॉज 6500 में ये सब कुछ आपको मिलेगा एक साल के लिए। कोड आपको पता है मेरा, आपको यूज करना है Y542। मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख देती हूँ, Y542 is my code. You can use this code to avail the wonderful offers that we have provided for you. एक बार देख भी लेते हैं फटाफट से कि हमें कैसे जाना है, कैसे डिस्काउंट कैसे अवेल करना है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर आप टेस्ट सीरीज या बुक्स लेना चाहते हैं तो Y542S लगा देना पीछे, दैट विल बी द कोड। अगर आप सिर्फ डिस्काउंट चाह रही हैं बैचेस में तो उसके लिए Y542 चलेगा। मेन पेज पे आके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स आपने सिलेक्ट करने हैं। इसके अंदर आपने जाना है यूजीसी में। यूजीसी में आपको सभी हमारे बैचेस में इस तरीके से, एक सेकेंड, यूजीसी के आपको हमारे सभी बैचेस में इस तरीके से डबल वैलिडिटी दिख रही होगी। गो इन द दिसंबर सेक्शन एंड यू कैन फाइंड दिस यूजीसी इंग्लिश मेगा पैक। कहाँ गया? टॉप पे है बिल्कुल, यूजीसी इंग्लिश मेगा पैक फर्स्ट पे दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके प्यार से ये ऑफ कोर्स आई एम श्योर मोस्ट पॉपुलर भी होगा। कूपन कोड यहाँ एंटर कर देना Y542। ये देखो, ये आपका 31,000 का जो कोर्स है ये 6500 का हो गया है। इसमें आपको बुक्स भी फ्री होम डिलीवरी के साथ मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो दिसंबर की तैयारी भी कर लोगे, जून की तैयारी भी कर लोगे, अगले साल का दिसंबर का भी हो जाएगा, पर तब तक हमने पहुंचना ही नहीं, हम जून तक क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ बुक्स या टेस्ट सीरीज ऑर्डर करनी है उसका भी तरीका बता देती हूँ, बिकॉज लास्ट मिनट में देखो टेस्ट सीरीज और बुक्स काफी यूजफुल रहती हैं। आपने वापस वो यूजीसी वाले आप सेक्शन में जैसे गए, मान लो आप यूजीसी में दिसंबर वाले में गए, आपको साइड में प्रोडक्ट कैटेगरी दिखेगी। आप चूज कर सकते हो कि आप सिर्फ मान लो बुक्स लेना चाहते हो या सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, देन आपको मेरी फोटो के साथ ये बुक्स का सेट मिलेगा। गो फॉर पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट वन, बिकॉज आपकी मेरिट तो देखो पेपर 1 पेपर 2 दोनों से बनेगी। इसमें मैंने आपको बताया था कोड लगेगा Y542S। तो ये बुक्स का पैक आपको 1000 रुपए का मिल जाएगा। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी है, 3-3 बुक्स हैं दोनों में, और एक आपको प्रैक्टिस बुक मिलेगी जिसमें ओवर 2000 एमसीक्यूज हैं, सॉल्व है विद सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द 10 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, डू अवेल इट, टेक इट फॉरवर्ड फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन इट। वैसे भी बहुत ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है फेस्टिवल्स का, so do invest in your future. That's all I can say. That's all. Thank you so much, everybody. Have a very good